हेलो गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पार्ट 2 बुक है उसका विथ एडजस्टमेंट के थ्रू हम एंट्रीज पास करेंगे। विथ एडजस्टमेंट के थ्रू जो भी हमारे जो हमने विदाउट एडजस्टमेंट में जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाया था उसी के अकॉर्डिंग हम थोड़े से यहाँ पर एडजस्टमेंट देखेंगे, क्योंकि एग्जाम में मोस्टली हमारा यहीं से क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। ओके, स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक बार हम इसका मीनिंग देख लेते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का या फाइनल अकाउंट का। तो फाइनल अकाउंट आर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट at the end of the financial year to disclose the financial position of business concern। फाइनल अकाउंट क्या करता है? फाइनल अकाउंट एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो फाइनेंशियल पोजीशन को डिस्क्लोज करने के लिए या इससे रिलेटेड यूजेज और जो सोर्सेज होते हैं उनको डिस्क्लोज करने के लिए एक पर्टिकुलर पीरियड जो हमारा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का होता है, इस पीरियड के अंदर अंदर जो स्टेटमेंट हम बनाते हैं उस स्टेटमेंट को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोलते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बोल सकते हैं या फाइनल अकाउंट बोल सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमारा फर्स्ट था उसके अंदर हमने जर्नल, लेजर और ट्रायल बैलेंस। ऑटोमेटिकली हमारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ये फाइंड आउट करता है ट्रायल बैलेंस, यानी कि ट्रायल बैलेंस तक पहुंचने के लिए हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 बनाया था, जिसमें हमने उसके मीनिंग देखे थे, हमने उसके जर्नल, लेजर, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, बीआरएस सारा देखा था हमने। एंड अगेन उसके जो हमारे अकाउंटिंग क्वेश्चन थे वो सारे चेक किए थे। उसके बेस में हमने फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाया था। ट्रायल बैलेंस हमारा क्या था? ट्रायल बैलेंस ये हमारा एक अर्थमेटिकल जो भी एक्यूरेसी थी हमारी या जो भी प्रॉब्लम्स, जो एरर्स आ रही थी उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान के, उनको अच्छी तरीके से मेंटेन करके सेटल करने का काम करा था ट्रायल बैलेंस। यहाँ तक हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट 1 में देखा था। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 की बात कर रहे हैं हम। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2 में हमने ट्रायल बैलेंस को बेस बनाकर ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, ये 3 तरीके के अकाउंट हमने यहाँ से प्रिपेयर करने हैं। तो चलते हैं अंदर और अंदर चल के देखते हैं अब इन तीनों अकाउंट्स के अंदर अंदर कौन कौन सी ऐसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है जिनको हमने तैयार करना है। इन एडिशनल इन्फॉर्मेशन का एक सिंपल सा लॉजिक है, इनको समझने के लिए कि ये समझ सकते हैं कि एडजस्टमेंट जो होता है मोस्टली जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन होता है, यानी प्रीवियस ईयर का जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स का जो भी एक क्वेश्चन दिया हुआ होता है, उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसी हमने प्रॉब्लम्स की थी या ऐसी कुछ मिस्टेक्स हमसे रह गई थी, उसी मिस्टेक्स को हम वापस करेक्ट करने के लिए या सॉल्व करने के लिए एडजस्टमेंट के थ्रू हम उसको सॉर्ट आउट करते हैं। तो एडजस्टमेंट जो होती है वो प्योरली टोटली बेस्ड होती है हमारे जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस शीट या प्रीवियस ईयर का जो ट्रायल बैलेंस होता है उस पर। ओके, एडजस्टमेंट का देखते हैं यहाँ पर। एडजस्टमेंट क्या है? अकॉर्डिंग टू एक्रुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग, ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ करंट ईयर पेबल or paid in advance and incomes receivable or received in advance should be recorded in the financial statement in order to get correct financial position and profit or loss. This process is called adjustment. The journal entries passed for the adjustment or recording all items which needs alterations are called adjustment entries। एक बार दोबारा मैं फिर से बताता हूँ कि जो एडजस्टमेंट क्या होता है कि जो भी हमारे फाइनेंशियल ईयर के एक्रुअल कंसेप्ट के बेस पे जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है उस फाइनेंशियल ईयर पे ये या तो हमने उनको एडवांस में पे कर दिया हो या फिर उनको पे करना अभी बाकी हो या वो पेंडिंग पे हो, तो उनको एडजस्ट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस में उनको करेक्ट फॉर्म में दिखाने के लिए हम एडजस्टमेंट का सहारा लेते हैं। और एडजस्टमेंट के थ्रू जो जनरल एंट्री पास की जाती है, इन एडजस्टमेंट को रिकॉर्ड करने के लिए या इनको अपने अपने सेपरेट अकाउंट में मेंटेन करने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसको हम एडजस्टमेंट एंट्री बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनल अकाउंट। द ट्रांजेक्शंस which do not appear in the trial balance are to be noted as adjustments. The items that appear in the trial balance have a single effect in the final accounts, but the transactions which appear outside the trial balance have a dual effect. हमारे जो फर्स्ट नंबर का जो ट्रांजेक्शन है, हम फर्स्ट नंबर पे जिस ट्रांजेक्शन को आप सेटलमेंट करेंगे, जिसका एडजस्टमेंट करेंगे, वो है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम यहाँ पर एक बार समझ लेते हैं कि होता क्या है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर होता है, जो हमारा 1 अप्रैल टू 2000 जो हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इस ईयर में जो भी हमने ऑपरेट कराने के लिए, जो ऑर्गेनाइजेशन को ऑपरेट कराने के लिए जो भी हमने गुड्स परचेज किए थे, उन गुड्स में से कुछ गुड्स तो हमारे उसी ईयर में यूज हो गए थे और कुछ ऐसे गुड्स थे जिनको अभी तक यूज़ होना बाकी था या यूज़ नहीं हो पाए या जो बच गए थे गुड्स। तो इन्हीं रिमेनिंग गुड्स को हम जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करेंगे या जब तैयार कर चुके होंगे, तो जो बचे हुए गुड्स हैं उनको हम क्लोजिंग स्टॉक का नाम देंगे। तो इसकी जो जनरल एंट्री या इसका जो एडजस्टमेंट करेंगे, इफ द क्लोजिंग स्टॉक इज नॉट गिवन इन द ट्रायल बैलेंस एंड शोन एज एन एडिशनल इन्फॉर्मेशन आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस, द एडजस्टमेंट एंट्री विल बी क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। इट मीन्स जो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट होता है, उस ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग साइड को हम बाय क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, क्लोजिंग स्टॉक का जो एडजस्टमेंट रहेगा, द इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट विल बी ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक को हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। सिमिलर, इन ट्रेडिंग अकाउंट द अमाउंट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक विल बी क्रेडिटेड, देन इन द बैलेंस शीट द क्लोजिंग स्टॉक आर शोन इन द करंट असेट्स इन असेट साइड्स, डेबिट साइड।
The closing stock will be shown on the asset side of the balance sheet. If closing stock is given in trial balance only, अगर क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन रहता है तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में, हम उस सिचुएशन में क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट करते हैं, देन परचेज अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट हम करते हैं. द इफेक्ट ऑफ द एडजस्टमेंट विल बी द क्लोजिंग स्टॉक जो हमारा होता है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट. नाउ गो टू द नेक्स्ट एडजस्टमेंट इज outstanding expenses which have been incurred during the year and whose benefit has been derived during the year but the payment has not been made are called outstanding. The adjustment entry will be expenses account debit to outstanding expenses account. The effect of the adjustment will be trading account and profit and loss account. The adjustment of outstanding expenses will be adjusted on the wages which is recorded in the debit side of trading and profit and loss account in the post and to the respective expenses and shown on the debit side of the trading and profit and loss account. In the balance sheet, it will be shown on the liability side of the balance sheet. Now, adjustment next is prepaid expenses. The expenses which have been paid in advance, whose benefit will be available in the future, are called unexpired or prepaid expenses. The adjustment entry will be prepaid expenses account debit to expenses. The effect of the adjustment will be in the trading and profit and loss account, deducted from respective expenses and shown in the debit side of the trading and profit and loss account. And in the balance sheet, it will be shown on the asset side. An income which has been earned but not received during the accounting year is called accrued income. The adjustment entry will be accrued income account debit to income account, and the effect of the adjustment will be accrued income will be added to the respective income and shown on the credit side of the profit and loss account, and in the balance sheet it will be shown on the asset side in the head of current assets. Now next is income received in advance. Income received but not due is called income received in advance or unearned income. The adjustment entry will be income account debit to income received in advance account. The effect of the adjustment will be it should be deducted from the concerned income and shown in the credit side of profit and loss account because it is income, and in the balance sheet it is shown on the liability side. Next is depreciation. Depreciation means the decrease in the value of assets. It is considered as a loss. The adjustment entry will be depreciation account debit to asset account. The effect of the adjustment will be it is shown on the debit side of profit and loss account as a separate item, and in the balance sheet the amount of depreciation is deducted from concerned assets. Now next is bad debts. Any irrecoverable portion of sundry debtors is termed as bad debt. Bad debt is a loss. The adjustment entry will be bad debts account debit to sundry and profit and loss account debit to bad debts account. The effect of the adjustment will be if the bad debts is given in the trial balance only, then it is shown on the debit side of the profit and loss account as a separate item. And now next is bad debt. Further bad debts. If a debt become bad after the preparation of trial balance, it is called further bad debt. If the bad debt is given in trial balance and further bad debt is given in adjustment, then the effect of the adjustment will be further bad debt should be added to the bad debts given in trial balance and shown on the debit side of profit and loss account. In the balance sheet of the amount of further bad debts is deducted from sundry debtors. Provision for bad debt and doubtful debt. The amount debited to the profit and loss account in anticipation of future bad debts is called provision for doubtful debt. The adjustment entry will be profit and loss account debit to provision for bad debts account. Provision for bad debts, doubtful debt. If the provision for doubtful debt is given in trial balance, it means old provisions, and adjustment in the adjustment we can say that new provision. The effect of the adjustment will be in the profit and loss account, new provision is added to the bad debt and old provision is deducted. If the provision for bad debts is given in the trial balance and adjustments,
The effect of the adjustment will be in balance sheet, new provision is deducted from the sundry debtors. Now next is provision for discount on debtors. A provision made in the profit and loss account of the year for anticipated amount of discount to be paid to the debtors in subsequent year is called provision for discount on debtors. The adjustment entry will be profit and loss account debit to provision for discount on debtors. And the effect of adjustment will be in profit and loss account, provision for discount on debtors should be debited, and in the balance sheet, the amount of discount on debtors should be deducted from sundry debtors. Now, provision for discount on creditors. Provision is made in the profit and loss account of the year for an anticipated amount of discount to be received from the creditors in the subsequent year. It is called provision for discount on debtors. It is called provision for discount on creditors. The adjustment entry will be provision for discount on creditors account debit to profit and loss account. The effect of the adjustment will be in profit and loss account. It should be credited, and in the balance sheet it should be deducted from sundry creditors. Now next is interest on capital. As per the business entity concept, capital invested by the owner in the business considered to be loan given by him to the business. So the owner should get interest on the amount he invested. It is called interest on capital. The adjustment entry will be interest on capital account debit to capital account. And the effect of the adjustment will be in profit and loss account, it should be debited as a separate item, and in the balance sheet, interest on capital added to the capital. Now next is interest on drawings. The amount given by the owner as interest for the amount he withdraw from the business is called interest on drawings. It is a profit to the business. The adjustment entry will be drawings account debit to interest on drawings account. And the effect of that adjustment will be in the it is credited to the profit and loss account as a separate item, and in the balance sheet it should be deducted from capital. Manager's commission. The commission given to the manager against profit is called manager commission. It is calculated on a fixed percentage of profit. The adjustment entry will be manager's commission account debit to outstanding commission account. And the effect of the adjustment will be in profit and loss account, manager's commission should be shown on the debit side as a last item, and in the balance sheet it should be shown on the liability side. Manager commission may be before charging such commission and after charging such commission. Calculation of manager's commission before charging such commission is now notional profit multiplied by rate of commission divided by 100. And calculation of manager's commissions after charging such commission is notional profit multiplied by rate of commission divided by 100 plus rate of commission. Notional profit means for calculating the manager commissions, we should find out the difference between debit side and credit side of the profit and loss account. This difference is called notional profit. Now go to the format of trading and profit and loss account is in the debit side, some items are included. In debit side, these are items included. The name is opening stock, purchase, less purchase return, wages, less wage prepaid, add outstanding wages. Now go to the credit side of trading and profit and loss account. Sales, less sales return or return inward, and closing stock. Now go to the profit and loss account. The credit side of profit and loss account is gross profit transfer from trading and account loss account, then commission, add accrued commission, less received in advance, provision for discount on creditors, and last one is interest on drawings. Discuss about the debit side of the profit and loss account. Indirect expenses is salaries, add outstanding. In the salaries we add outstanding salaries and deducted prepaid salary. And separate item is depreciation, and another separate item is bad debts. In the bad debts we add further bad debts and new provision and less old provision. Now advertisement and interest on capital, manager's commission, then finally net profit. Now go to the another format of financial statement is balance sheet. In the balance sheet there are two sides, liability side and asset side. In the asset side, the items are cash in hand, cash at bank, bills receivable, closing stock, sundry debtors, and furnitures, and depreciation on furnitures. In the liability side, bank overdraft, bills payable, outstanding expenses, income received in advance, sundry creditors. ओके गाइज, ये हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो एडजस्टमेंट बेस्ड चैप्टर था, इसमें हमने चेक किया था कि कैसे कैसे हमारा एडजस्टमेंट यहाँ पर यूज़ होता है, कैसे कैसे एडजस्टमेंट की हम एंट्री करते हैं और उसको हम एडजस्ट करते हैं उनके सेपरेट अकाउंट्स में. ओके, थैंक यू गाइज.